Okay. Now we will see what are the different types of forces acting on the fluid. Okay. So the different types of forces acting on the fluid, there are 6 types of forces. So first is inertia force. Okay. So inertia force. So we know whenever the fluid is flowing, okay, or whenever the body is flowing, whenever the body is moving, okay, or body is in motion, so the body has property to remain in the state of rest or motion. Okay, so this property is nothing but inertia. So inertia is nothing but it is the property by virtue of which the body want to remain in the state of rest or motion. Okay, so there is some force which is responsible. So that force is nothing but inertia force. Okay, so inertia force is mathematically given as the product of mass into acceleration of the flowing fluid. Okay, and the inertia force always act in the direction opposite to direction of acceleration. Okay, then second type of force is viscous force. So viscous force is nothing but it is due to viscosity of the fluid. Okay, so viscous force is nothing but resisting force. इसको already हमने डिटेल में देखा in unit number 1. Okay, and it is present in fluid flow problem where viscosity has important role. Okay, then third is gravity force. So gravity force is nothing but it is due to weight of the body. कोई भी बॉडी है या कोई भी फ्लूइड है उसका जो वेट है, ओके, सो वेट इज आल्सो अफेक्टिंग द फ्लूइड फ्लो. ओके, so this gravity force is nothing but it is mass into acceleration due to gravity mg. Okay, and it is present in case of open surface flow. And next is pressure flow. So pressure flow, it is nothing but it is a product of pressure into area of flow, cross section area of flow. Okay, so this is due to pressure. Okay, and pressure force is basically closed flow जो होते हैं. For example, case of pipe. तो यहाँ पे pressure force are very important because we know in the pipe flow pressure decreases in the direction of flow. Okay, then next is surface tension force. So surface tension force, it is nothing but it is a product of surface tension into length. Surface tension का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर. हमने यूनिट नंबर 1 में देखा था. Okay, so surface tension sigma is nothing but force upon surface tension force acting per unit length. So आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा से तो आपको सरफेस टेंशन फोर्स मिल जाएगा. So surface tension force is nothing but it is a product of surface tension into length. Okay, and last is elastic force. So elastic force is due to elastic stress. Okay, and basically elastic force compressible flow में रहता है because compressible flow में क्या होता है, gaseous flow में थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज हुआ तो आपका जो गैस होता है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है. ओके, and liquid के केस में ऐसा नहीं होता. So basically elastic forces are present in gas flow. Okay, so for a flowing fluid the above mentioned forces may not always be present. अभी ये सबकी सब फोर्स हर फ्लो में रहता है ऐसा कुछ नहीं, कंपलसरी नहीं है. जैसे ओपन फ्लो होगा तो ओपन फ्लो में प्रेशर फोर्स नहीं होगा. ओके, या फिर आपका लो विस्कोसिटी का फ्लूइड होगा तो उस केस में विस्कस फोर्स एकदम नेग्लिजिबल रहेगा. या फिर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इलास्टिक फोर्स एब्सेंट रहेगा. ओके, या फिर फ्लो का जो डेप्थ है वो ज्यादा है तो सरफेस टेंशन फोर्स नेग्लिजिबल रहेगा. सो इट इज नॉट कंपलसरी ऑल द फोर्सेस शुड बी प्रेजेंट. ओके, so based on the above forces we are going to see the different types of dimensionless number. So first dimensionless number which we are going to see, that is Reynolds number. अभी Reynolds number is rho v d upon mu or vd upon mu. ये already हम first unit से देखते आ रहे, but we are going to see in detail the definition and derivation of Reynolds number. Okay, so what is Reynolds number? So Reynolds number is simply defined as the ratio of inertia force to viscous force. Okay, see एक ये 6 सीक्वेंस आपने याद रखा फोर्स का. ओके, ये 6 सीक्वेंस आपने याद रखा तो बेसिकली आपकी जो डेफिनेशंस है, ओके, वो डेफिनेशंस ऐसे ही है. इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ओके, रेशियो ऑफ, और इनमें स्क्वायर रूट नहीं है और बाकी सारे डेफिनेशन में स्क्वायर रूट है. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स. देन थर्ड जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन. सो जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है उनके न्यूमरेटर में हरदम इनर्शिया फोर्स है.
ओके, और डिनोमिनेटर में विस्कस, ग्रेविटी, ये सारे फोर्सेस आएंगे। ओके, तो हम अलग अलग 5 टाइप के डायमेंशनलेस नंबर देखेंगे। So first is Reynolds number. So it is simply defined as the ratio of inertia force upon viscous force. Okay, that means, see, suppose fluid flow हो रहा है, suppose this is a fluid, it is flowing. Okay, so inertia force, it is a force which will try to keep the fluid in motion, and viscous force, it will be the opposing force which will try to oppose the motion. So the ratio of this inertia force to viscous force, so it is called as Reynolds number. Okay, so if viscous force, inertia force upon viscous force, okay, so this ratio is Reynolds number. So if viscous force is bigger, okay, कभी viscosity fluid का ज्यादा है और viscous force ज्यादा है, तो बेसिकली ये जो रेशियो है, ये रेशियो छोटा रहेगा। ओके, सपोज ऊपर 1000 है और नीचे 100 है, सो 1000 अपॉन 100, तो रेशियो कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, सो जब भी विस्कोस फोर्स ज्यादा होता है, इसका वैल्यू बिगर होता है, सो दिस रेशियो इज लेस देन 2000। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ हेलो सर। हाँ 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 हाँ, अप्रैल 19 का, 1920। हाँ, मतलब जो पिछले साल का जो था ना, वो लॉकडाउन। नहीं नहीं, अप्रैल 20 चाहिए एक बार वो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, गोरे सर को बोल दो ना कि 20 का रिजल्ट चाहिए, जो हमारा लास्ट लॉकडाउन नहीं होता क्या, वो वाला रिजल्ट। ओके, सो if viscous force is bigger, that means viscosity of the fluid is high. Okay, so in that case this ratio will be smaller, and if this ratio is less than 2000, so it will be laminar flow. Okay, and if the viscosity of the fluid is smaller, okay, viscosity smaller है, suppose ये ऊपर 100 है, ओके, और नीचे जो है वो है 0.001, 0.001। ओके, तो बेसिकली ये जो रेशियो होने वाला है, so basically this ratio will be 10,000. Okay, so it is greater than 4,000, so in that case the flow will be turbulent flow. So remember, here inertia and viscosity, viscous force, they are playing an important role. Okay, so the ratio of inertia force to viscous force, it is Reynolds number. Now we know inertia force is mass into acceleration. Okay, now we can rewrite this mass. Mass is nothing but okay, 1 minute. We know density. What is the definition of density? Density is mass upon volume, mass per unit volume. Okay, so what is mass? Mass is nothing but density into volume. So mass is nothing but density into volume. And what is acceleration? Acceleration is velocity upon time. Okay, so we can say डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो टाइम है, ये टाइम को हम इधर डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम के साथ। सो इट इज रो into volume upon time into t. Now we know volume upon time. So this volume upon time is nothing but discharge. Okay, so it is discharge. So that equals to rho into discharge into v, and we know discharge equals to product of area into velocity. Area into velocity. So it is rho into av into v. Okay, rho into av into v. So it is rho a v square. ओके, सो और इनर्शिया फोर्स कितना आता है, रो ए वी स्क्वायर। सो आपको याद रखना है इनर्शिया फोर्स इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, और ये आगे की डेफिनेशन में भी रो ए वी स्क्वायर रहेगा। ओके, देन सेकंड इज विस्कस फोर्स। सो वी नो विस्कस फोर्स इज नथिंग बट विस्कस स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, सो इट इज टाउ इनटू ए। अब ये शियर विस्कस स्ट्रेस को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। सो इट इज म्यू du by dy into a. So here du is nothing but change in velocity, so simply velocity upon dy. Dy is nothing but distance, so length. So it is mu into volume upon velocity upon length into area. Okay, so we will put these two values. So by definition, Reynolds number equals to inertia force upon viscous force equals to rho a v square upon mu into v by l into a. Now what we can cancel from numerator and denominator? Velocity, here velocity, area and area.
So this length will go in numerator. So we will have rho v L upon mu. Okay, rho v L upon mu. अभी इसको हम rewrite कर सकते हैं. Okay, ये रो को हम नीचे डिवाइड कर सकते हैं. So it is VL upon mu by rho. So the ratio of absolute viscosity to mass density is nothing but kinematic viscosity denoted by nu. So it is product of velocity into length upon nu. Okay. Now in case of pipe, flow through pipe, basically length जो होता है वो diameter होता है. Linear dimension is diameter. Okay. तो हम वहां पे यूज करते हैं rho vd upon mu और vd upon nu. Okay. So this was the derivation for deriving the Reynolds number. Okay. ये फॉर्मूले से आप Reynolds number डिफाइन कर सकते हो. Okay. After that, the next number which we are going to see, that is fraud number. Okay. So again, जो हमने definition देखा था, definition is same. Okay. Numerator में क्या रहेगा? ये ratio रहेगा. जितने भी dimensionless number है, जितने भी dimensionless number है, all the dimensionless number are the ratio. So it is the ratio of numerator में क्या रहने वाला है? Inertia force. Okay. अभी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया था ना कि आपने ये सीक्वेंस याद रखा. ओके. सो ये सीक्वेंस याद रखा तो आपको सारे डेफिनेशंस याद हो जाते हैं. ओके. सिर्फ पहला डेफिनेशन जो है रेनॉल्ड नंबर का, उसमें स्क्वायर रूट नहीं है. बाकी के सारे डेफिनेशन में स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ ये कॉमन है. सो फ्रॉड नंबर का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स. ओके. सो इट इज द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ the inertia force to gravity force. So Fe, fraud number is denoted by Fe. So mathematically, fraud number Fe equals to under root of Fi upon Fg. Okay. Now from above equation we know inertia force is rho ab square. Okay. So Fi equals to rho ab square and Fg. So Fg is nothing but force due to gravity, that is mass into acceleration due to gravity, and mass is nothing but density into volume. So it is rho into volume into g. Okay. Now volume is nothing but product of three different lengths. Okay. So it is rho L cube g. Okay. So we'll put this value rho L cube g. So we can rewrite this as rho into L square into L into g. Okay. So L square is nothing but area. So it is rho A L g. Okay. So we'll put this in above equation. So F equals to Fi upon Fg under root of. So it is under root of rho a v square upon under root of rho a lg. So rho a cancels from numerator and denominator. So finally we will have it is under root of v square upon lg. अब ये स्क्वायर को आप बाहर ले जा सकते हो रूट के. So finally it is v upon root of lg. Okay. So fraud number denoted by Fe, it is given by the v equals to Fe equals to v upon under root of lg. ओके. सो ये डेरिवेशन नहीं, बट आपको एक फ्रॉड नंबर का आपको जो डेफिनेशन है, ओके, और जो फॉर्मूला है ये याद रखना है, बिकॉज एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके. द फ्रॉड नंबर इज गिवन बाय, चार ऑप्शन रहेंगे. ओके. पहला ऑप्शन ऐसा हो सकता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, Fi अपॉन Fg अंडर रूट ऑफ Fi अपॉन Fg, Fg अपॉन Fi अंडर रूट ऑफ Fg अपॉन Fi. चार में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. या फिर द फ्रॉड नंबर इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज Fe इक्वल्स टू v अपॉन अंडर रूट ऑफ Lg, Lg अपॉन अंडर रूट ऑफ v. ओके. एंड ऑप्शन सी और डी कुछ अलग हो सकते हैं. सो लाइकवाइज एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ओके. देन नेक्स्ट इज Euler's number. So Euler's number, the Euler's number can be mathematically given as the square of the ratio of the inertia force of flowing fluid to the pressure force. Okay. तो जो आपका inertia force divided by pressure force है. Okay. इसका स्क्वायर रूट, मतलब ये जो मैंने बताया था. Okay. आपको अंडर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, ये कॉमन है. अभी थर्ड डेफिनेशन के लिए आपको क्या लेना है? इनर्शिया अपॉन प्रेशर. ओके. फर्स्ट के लिए हमने इनर्शिया अपॉन विस्कस लिया था रेनॉल्ड के लिए. देन फ्रॉड के लिए स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी लिया था. अभी आपको स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया अपॉन प्रेशर फोर्स लेना है. ओके. सो इट इज
the square root of the ratio of inertia force to the pressure force. Mathematically, EU is denoted by Euler's number is denoted by EU. So EU equals to under root of Fi upon Fp. ओके, मैं यहाँ पे inertia force जो है that is rho a v square, इसका derivation पहले देख लिया था. And Fp is nothing but pressure into area. Okay, so we'll put these values. So EU equals to under root of rho a v square upon P into A. So A cancels और ये जो रो है इसको हम P को डिवाइड कर देंगे. Okay, so it will be simply P by rho. Okay, so we can say it equals to under root of v square upon P by rho. अब ये स्क्वायर और रूट को आप बाहर ले जा सकते हो कैंसिल करके. So it will be v upon under root of P by rho. Okay, so Euler's number is given by EU equals to v upon under root of P by rho. Okay, after that next is Weber's number. So Weber's number is denoted by W suffix E, and mathematically it is defined as the square root of the ratio of the inertia force to surface tension force. Okay, inertia force न्यूमरेटर में कॉमन ही रहने वाला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको ये याद रखना है वेबर रहा तो सरफेस टेंशन फोर्स आएगा, यूलर्स रहा तो नीचे प्रेशर फोर्स आएगा. ओके, सो आपको नीचे का टर्म याद रखना है. ओके, सो it is the square root of the ratio of inertia force to surface tension force. So mathematically, WE equals to under root of Fi upon Fs. Okay, here Fi is nothing but rho a v square inertia force. Already हमने ऊपर derive किया है. Then Fs is surface tension force, so it is sigma into L. Okay, so putting the value, so WE equals to rho a v square upon sigma into L. Here A is nothing but product of length into length. Okay, so it is rho L square v square upon sigma into L. So L cancels. Okay, और ये जो okay, so finally we will have under root of rho L upon into v square upon sigma. ये rho L को आपको denominator में देना है. So it is under root of v square upon sigma upon rho L. Okay, then v square और root cancel हो जाएगा. So it is simply v upon under root of sigma upon rho L. Okay, so the formula for Weber number is v upon under root of sigma upon rho L. Okay, then the last dimensionless number which we are going to see, that is called as Mach number. Okay, so I think Mach number हमने unit number 2 में भी देखा था. So Mach number is simply defined as the square root of the ratio of the inertia force to elastic force. Okay, so basically यहाँ पे इलास्टिक फोर्स को हम लेते हैं और हमें पता है इलास्टिक फोर्स कहाँ पे रहती है, कॉम्प्रेसिबल फ्लो में. सो बेसिकली जब कॉम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो हम उसका मैक नंबर देखते हैं. ओके, इसका दूसरा डेफिनेशन भी आपने देखा है. मैक नंबर इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो टू सोनिक वेलोसिटी. ओके, सो वो भी एक डेफिनेशन है और मैथमेटिकल डेफिनेशन है. इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ inertia force to elastic force. Okay, so m equals to rho a under root of inertia force upon elastic force, so under root of Fi upon Fe. Now we know Fi equals to rho a v square inertia force, and Fe elastic force is nothing but elastic stress into area. So elastic stress is nothing but bulk modulus. So it is bulk modulus into area or bulk modulus into L square. Okay, so we'll put the values. So Mach number denoted by m, that equals to under root of rho a v square upon k into L. Okay, अब यहाँ पे एरिया को हम L स्क्वायर भी बोल सकते हैं. सो इट इज रो L स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय k L स्क्वायर. सो L स्क्वायर कैंसिल और ये रो को आपको k को डिवाइड करना है. सो इट इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अपॉन k बाय रो, देन स्क्वायर एंड रूट इट विल कैंसिल. सो इट इज v अपॉन अंडर रूट ऑफ k रो, सॉरी अंडर रूट ऑफ k बाय रो. सो ये जो टर्म होता है, ओके, अंडर रूट ऑफ k अपॉन रो, that means the ratio of bulk modulus of the fluid to the mass density. So it is called as sonic velocity. Okay, or it is nothing but this ratio equals to velocity of sound in air, denoted by sonic velocity c. Okay, so the second definition is it is the ratio of actual velocity to sonic velocity. Okay, remember here under root of k by rho, under root of k by rho, it is nothing but velocity of sound in the fluid. Okay, so another definition is Mach number, it is a ratio of actual velocity divided by sonic velocity. और इसके ऊपर क्लासिफिकेशन भी है. ओके,
हमने देखा है सबसोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो, देन hypersonic flow, supersonic flow. Okay, if Mach number is less than 6, so it is hypersonic flow. Mach number is greater than 1 and less than 6, so supersonic flow. Mach number equals to 1, sonic flow. Okay, so ये classification हमने already unit number 2 में देखा है. Okay, so if you understand this dimensionless number, so again we will come back to our model. Okay, the model और prototype था. So basically model और prototype के कुछ laws भी है. Okay, so based on the type of flow, there are some laws which the model should satisfy. Okay, so first is Reynolds Model Law. So Reynolds Model Law, it is nothing but it is a law in which we check whether the Reynolds number of the model and prototype they are same. Okay, so basically model law, it is applicable to pipe flow. आपके पाइप फ्लो के प्रॉब्लम होते हैं. ओके, या फिर जो आपके सबमरीन, एरोप्लेन या फिर फुल्ली सबमर्ज बॉडीज होते हैं. ओके, सो इसका आपको एनालिसिस करना है तो आपको एक्चुअली रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ चेक करना पड़ेगा कि आपका रेनॉल्ड नंबर ऑफ मॉडल एंड रेनॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप, ओके, दे आर सेम और नॉट. ओके, so as defined earlier, the Reynolds number, it is a ratio of inertia force to viscous force. Okay, hence the fluid flow problem where viscosity is playing an important role. Okay, so ऐसे जहाँ पे viscosity important है, ऐसे fluid flow में और ऐसे problems में हम उसका Reynolds number check करते हैं. So Reynolds law states the Reynolds number of the model, it should be equals to Reynolds number of the prototype. Okay, so Reynolds number of model and prototype, it should be same. So we'll say let Vm is the velocity of fluid in model, rho m it is the density of fluid in model, Lm it is the length or linear dimension of the model, and mu m is viscosity of the model. Similarly, Vp, rho p, Lp and mu p, these are the velocity, density, linear dimension and viscosity of the prototype. So according to Reynolds model law, the Reynolds number of model, it should be equal to Reynolds number of prototype. Okay, therefore rho m Vm Lm upon mu m, that should be equal to rho p Vp Lp upon mu p. Okay, अभी हम ये क्या करेंगे, जितनी भी लेफ्ट साइड की क्वांटिटीज है इसको राइट साइड में डिवाइड कर देंगे. ओके, सो वी विल हैव rho p upon rho m into Vp upon Vm into Lp upon Lm into 1 upon mu p upon mu m. Okay, so this should be equals to 1. Now this rho p upon rho m, this is nothing but density ratio. Then velocity of prototype upon velocity of model, this is nothing but velocity ratio. Then length of prototype upon length of model, this is nothing but length ratio. And viscosity of prototype upon viscosity of model, this is nothing but viscosity ratio. Okay, so these ratios, product of density ratio into velocity ratio into length ratio divided by viscosity ratio, this should be equals to 1. Okay, so this is nothing but Reynolds model law, where rho r is nothing but rho p by rho m. अभी हमने define किया था. Density ratio, velocity ratio, length ratio and viscosity ratio. Okay, then scale ratios for time, acceleration, force and discharge. Okay, ये भी हम obtain कर सकते हैं. Now time ratio. So time ratio क्या होता है? It is nothing but we already know velocity is nothing but length upon time. So time is nothing but length upon velocity. Okay, so आप क्या करोगे, length ratio, that means length of prototype upon length of model divided by velocity of prototype upon velocity of model, इनका रेशियो ले लोगे. So length ratio upon velocity ratio, तो ये रेशियो से आपको टाइम रेशियो मिल जाएगा. Okay, similarly acceleration ratio is nothing but आपको टाइम रेशियो पता चल गया तो velocity upon time, so velocity ratio upon time ratio is acceleration ratio. Okay, similarly force ratio, so force ratio is nothing but mass into acceleration force. Therefore force ratio is product of mass ratio into acceleration ratio. अभी हमने देखा, हमें पता है mass is nothing but product of rho ab, okay, by continuity equation. So it will be rho density ratio into area ratio into velocity ratio into acceleration ratio. Here area ratio is nothing but area's length square, so it is density ratio into length square ratio, length ratio square into velocity ratio into acceleration ratio. So using this you can find. Then discharge ratio, so discharge ratio is nothing but rho ab. Okay, so it is product of density ratio into area ratio into velocity ratio, so it is
density ratio into length ratio whole square into velocity ratio. Okay, so we will see one numerical on this Reynolds Model Law. So a pipe of diameter 1.5 meter is required to transport an oil of specific gravity 0.9, okay, and viscosity 3 into 10 power minus 2 poise at the rate of 3000 liters per second. Okay, the tests were conducted on a 15 centimeter diameter pipe using water at 20 degrees Celsius. Then find the velocity ratio, find the velocity and rate of flow in model. Okay, then the viscosity of water at 20 degrees Celsius is 0.01 poise. Okay, so what is given in the problem? See, आपको जो भी वैल्यूज दी है यहाँ पे एक्चुअली आपको बोला नहीं है कि प्रोटोटाइप है कि मॉडल है, बट आपको पूछा मॉडल का है. इसका मतलब ये ऊपर जो भी वैल्यूज दी है दिस आर द वैल्यूज फॉर प्रोटोटाइप. ओके, so a pipe of 1.5 centimeter 1.5 meter, that means it is a diameter of pipe, prototype, okay, is used to transport an oil of specific gravity 0.9. so ये 0.9 क्या हुआ? It is density of prototype. Okay, and viscosity is 3 into 10 power minus 2. Okay, so it is 3 into 10 power minus 2 poise. ये हो गया viscosity of prototype. Okay, at 3000 liter per second. So you get discharge of prototype 3000 liter per second. So 3000 into 10 power minus 3. So 3 meter cube per second. And specific gravity कितना बोला है? 0.9 for prototype. Then tests were conducted on a 15 centimeter pipe. So ये 15 centimeter क्या हुआ? मॉडल हो गया. ये 1.5 मीटर बड़ा है ना, तो ये प्रोटोटाइप हो गया. ये 15 centimeter छोटा है. So it is model. So model का कितना है? Diameter 15 centimeter, so 0.15 meter. Yeah, again density हमें directly नहीं दी है, हमें specific gravity दी है. So density हम निकालेंगे specific gravity into 1000, so 900 prototype का हो गया. Okay, उसके बाद में आपका जो टेस्ट कंडक्टेड पाइप में है वहां पे क्या यूज किया? वाटर यूज किया है. वाटर यूज किया है तो उसका डेंसिटी 1000 हो गया. एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है, मतलब ये आपको विस्कोसिटी ऑफ वाटर दैट इज रो म्यू एम दिया है. सो म्यू एम कितना है? 0.01 पॉइस. सो 1 into 10 power minus 2 पॉइस. ओके, सॉरी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सॉरी, 1 into 10 power minus 2 पॉइस हुआ. ओके, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. सो इट विल बी 1 into 10 power minus 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ओके, नाउ हमें क्या बोला? फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज इन द मॉडल. तो हमें क्या निकालना है? हमें एक तो वेलोसिटी निकालना है और दूसरा डिस्चार्ज निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? अभी यहाँ से समझ में आ गया आपको. प्रॉब्लम में विस्कोसिटी दिया है. ओके, तो विस्कोसिटी कहाँ पे, कौन से डायमेंशनलेस नंबर में विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है? हमारे रेनॉल्ड नंबर में, बिकॉज रेनॉल्ड नंबर इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स. तो हम यहाँ पे कौन सा मॉडल लॉ यूज करेंगे? हम यहाँ पे रेनॉल्ड मॉडल लॉ यूज करेंगे. सो एज पर रेनॉल्ड मॉडल लॉ, the Reynolds number of model, it should be equal to Reynolds number of prototype. So rho m vm dm upon mu m that equals to rho p vp dp upon mu p. अब यहाँ पे आपको मॉडल और प्रोटोटाइप का डेंसिटी पता है? यस, दिया है प्रॉब्लम में. डायमीटर पता है? दिया है. विस्कोसिटी दिया है और वेलोसिटी हमें प्रोटोटाइप का दिया है. सो देयर इज ओनली वन अननोन दैट इज वी एम. ओके, तो आपको यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करने. ओके, सो वी कैन रिराइट दिस एज, ये प्रोटोटाइप का वेलोसिटी डिवाइड किया और इन सबको इधर डिवाइड किया है. सो रो पी अपॉन रो एम. ओके, सो 900 अपॉन 1000. then diameter of prototype 1.5 meter था. diameter of model 15 centimeter, that is 0.15 meter था. ओके, यहाँ पे वाटर का विस्कोसिटी 1 into 10 power minus 2 और प्रोटोटाइप का विस्कोसिटी 1 into 3 into 10 power minus 2. So ये सॉल्व करोगे आप. So it this 900 upon 1000 into 10 into 1/3, so it comes out to be 3. ओके, उसके बाद में प्रोटोटाइप का वेलोसिटी दिया है आपको, आई थिंक. ओके, नहीं सॉरी, वेलोसिटी नहीं दिया है. ओके, तो हमें वेलोसिटी रेशियो मिल गया. ओके, अभी वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप.
सो आप डिस्चार्ज ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. So velocity of prototype is discharge of prototype divided by area of prototype. So 3 upon pi by 4 dp square. So velocity आ जाता है 1.697. So ये वैल्यू पुट कर दो. So velocity of model is 3 into vp. So 3 into 1.697. So it is 5.091 meter per second. Okay. So this will be the velocity of model. After that, second क्या पूछा आपको? रेट ऑफ फ्लो थ्रू मॉडल. सो आपको वेलोसिटी पता चल गई तो आप क्या करोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके. सो Q of model is area of model into velocity of model. So pi by 4 into 15 centimeter square. So 0.15 meter square into velocity is 5.091. So putting this, so it comes out to be 0.0899 meter cube per second. और लीटर में पता करना रहा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट इज 89.9 liters per second. Okay. So I think today we'll stop here because सारे लॉस तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. Okay. So अभी हमारा सिर्फ फ्रॉड लॉ, उसके बाद में उसके ऊपर एक प्रॉब्लम, देन यूलर्स मॉडल लॉ, वेबर्स मॉडल लॉ एंड मैक मॉडल लॉ, जो हमने 5 डायमेंशनलेस नंबर देखे हैं, और एक जनरलाइज प्रॉब्लम. ओके. सो इतना हमारा बाकी है. सो आई थिंक कल हाफ एन आवर में हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा.